Hello everyone, my name is Pooja Wankhede and in today's lecture we are going to learn a subject that is purchasing and material management. In previous lecture we have completed all the 4 units and we have also taken unit 5's some of the points like warehousing management, material handling, traffic and transportation, disposal of scrap, surplus and obsolete materials. In today's lecture we are going to learn a new topic that is inventory control of spare parts. Okay, so first of all let's think about it. What is meant by spare part? What is a spare and why it is needed? Manufacturing process comprise complex equipment with thousands of sub assemblies and discrete parts. Okay, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स होती है जो हम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं. एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स process in which very complex equipment are used. These complex equipment are consist of many sub assemblies and discrete parts and sub assemblies of machines will eventually require repair and replacement. ये जो parts होते हैं मशीनरी के, जो parts होते हैं सब assemblies के parts होते हैं, वो उसको eventually हमें क्या करना होता है, repair करना होता है या replace करना होता है. Increased efficiency of production plants require minimization of machine downtime. Okay, so अभी अगर हमें हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है या फिर वर्किंग कैपिटल है उसका अगर हमें इफिशिएंसी इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन का इफिशिएंसी इंक्रीज करना है, तो जो डाउन टाइम होता है, जिस टाइम पे देखो मशीन जो है वो मेंटेनेंस के लिए आती है या रिप्लेसमेंट के लिए आती है, तो वो टाइम हमें मिनिमाइज करना होगा. दैट्स देन वी विल गेट अ मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन. ओके, हाउएवर वी डोंट नो विच मशीन पार्ट विल फेल व्हेन. ओके, अभी देखो हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. हमें नहीं पता होता है कि एट विच टाइम एंड एट विच पॉइंट सम ऑफ द मटेरियल गेट फेल्ड. ओके, therefore availability of a wide range of spare parts is a major factor. इसीलिए देखो वाइड रेंज ऑफ स्पेयर पार्ट्स यानी जो हमारे पास हमने रखे हुए होते हैं यूज करने के लिए, जब ब्रेक डाउन होता है तो या डाउन टाइम होता है, वो टाइम पे यूज करने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स रखे होते हैं, तो वो हमें इसीलिए हमें वाइड रेंज ऑफ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि जब भी ब्रेक डाउन होगा या फिर मशीन डाउन टाइम होगा तो हम वो स्पेयर पार्ट डायरेक्टली यूज कर सके. ओके, therefore availability of wide range of spare parts is a major factor for reduction in downtime when a breakdown occurs. Okay, so going further, a logical approach to solve the issue of spare parts availability lies in stocking large quantities of spare parts for immediate use whenever needed. अभी देखो लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस इशू ऑफ अ स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट का अवेलेबिलिटी का जो इशू है उसको हमें सॉल्व करना है. लाइज इन स्टॉकिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेयर पार्ट का लार्ज क्वांटिटी हमें क्या करनी है, स्टोर करके रखनी है फॉर इमीडिएट यूज वेन एवर नीडेड. जब भी हमारी मशीन जो है वो ब्रेक डाउन होगी तो इमीडिएटली हम ये स्पेयर पार्ट्स इसमें से यूज कर सकते हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड स्टॉकिंग इज लिमिटेड बाय अ स्पेस एंड कॉस्ट. ओके, जो स्टॉक हम करके रख रहे स्पेयर पार्ट्स जो है, तो उसके लिए हमें सबसे मिनिमम स्पेस एंड मिनिमम कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. देन इट विल बी efficient for our production house. Therefore designing a system and managing spare parts in an optimal way represent a critical and important task, which is an important task क्योंकि इस पे ही हमारे प्रोडक्शन की efficiency डिपेंड करती है. ओके, Now going further, what are the basics of spare parts management? ये जो स्पेयर पार्ट्स है उनका हमें मैनेजमेंट करना है, जिसके लिए कोई बेसिक्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स होंगे तो वो हमें आज स्टडी करने हैं. स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज अकाउंट फॉर 8% ऑफ द एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, जो एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं उसका 8% जो है वो सिर्फ स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं. स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट इज the process of planning and aligning services, parts, inventories, resources and processes to ensure optimal customer service and response with minimal risk and
cost. Okay, so spare part management embraces three different kinds of service spare parts. Okay, अभी देखो spare parts का अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो it contains three kinds of various spare parts, service spare parts, which are divided into following groups. Okay, first is first party spare parts, second is second party spare parts, and third is third party spare parts. Okay, basics of spare part management. Each type of service part also reflects a different type of control situation. On this basis service spare parts can further be subdivided into two main categories. अभी देखो ये जो types of spare parts है ना, तो वो और भी different type of control situation से भी हम divide कर सकते हैं. तो उसमें इनके दो subdivided, it gets subdivided into two main categories, which is repairable or and non-repairable or disposables. Spare parts management is at the heart of any effective service operation. Service operation depends on the knowledge about the failure behavior of the system and the ability of the project that demands. Okay, now what is the economics of service parts? ओके, सर्विस पार्ट्स इन्वेंटरी वैल्यू इज इम्पोर्टेंट. ओके, सर्विस पार्ट जो है वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसको हम स्टोर करके रखते हैं एज इन द सेंस ऑफ इन्वेंटरी, एंड इन्वेंटरी इज टू बी स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज. द इशू इज टू हैव द राइट पार्ट्स एट द राइट टाइम सो दैट आइदर प्लांट यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू जनरेशन इज नॉट निगेटिवली इम्पैक्टेड. ओके, राइट टाइम पे राइट पार्ट मिलना जरूरी होता है सो दैट वी विल गेट आइदर अ प्लांट यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू generation is not negatively impacted. How can spare parts management be turned into a competitive advantage? Okay, which service parts have to be stocked? Where are the service parts to be stocked? How many of them to be kept in stock for each of these service parts? Okay, अभी देखो तो commonly asked questions means ये सर्विस पार्ट्स का मैनेजमेंट कैसे करना है. तो देखो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि कौन सा सर्विस पार्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा फेल हो रहा है, एंड विच इज टू बी स्टॉक्ड, एंड कहाँ पे उसका स्टोरेज करना है, वेयर इज टू बी स्टॉक, एंड हाउ मेनी ऑफ देम इज टू बी केप्ट इन स्टॉक फॉर ईच ऑफ दिस सर्विस पार्ट्स. Okay, now going further, economics of maintenance. These spare parts, अगर हम कोई spare parts ले रहे हैं उसको अगर हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में अगर स्टोर करके रख रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगा. तो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस. एज स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटेनेंस, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड मेंटेनेंस इकोनॉमिक्स. Some of the common approaches to maintenance are breakdown maintenance, then preventive maintenance, predictive maintenance, and proactive maintenance. These are the four types of maintenance. Now cost of maintenance. What is the cost of maintenance? Total cost due to failure of an equipment will be. अभी देखो जो हमारा अगर इन केस अगर कोई हमारा मटेरियल या इक्विपमेंट अगर फेल हो रहा है तो हाउ मच इट कॉस्ट. ओके, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट सेल्स, क्योंकि देखो अभी वो मशीन जो टाइम में हमारी फेल हो रही है तो वो टाइम का हमें लॉस हो रहा है सेल में. तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉस सेल्स, देन कॉस्ट ऑफ आइडियल लेबर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अगर मशीनरी कोई हमारी फेल हो रही है तो वहां पे लेबर जो होंगे उनको कोई काम नहीं होगा, तो उनका वो आइडियल कंडीशन में होंगे यानी कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे, तो उनका भी एक कॉस्ट हमें आता है. देन कॉस्ट ऑफ डिलेस इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, cost of scrap wastage and rejection, startup cost, and cost of customer dissatisfaction due to delays. These are the cost of maintenance that come in picture when our product gets fail or equipment get failure. Okay, issues regarding service part. What are the main issues regarding our service parts? Okay, we have many kinds of service part. What are the issues regarding these service parts? Okay, lack of visibility into service part inventory levels. Okay, now second is desperate sources of service part data, inconsistent naming conventions for service parts and suppliers, disconnected inventory planning and execution procedures, insufficient and fragmented use of automated and advanced analytics. These are the issues that are regarding the service parts. Okay, now we are going to learn about the success factor. What are the success factors that are necessary in order to get a good service parts stocks? Okay, align and coordinate service parts planning and operation across an extended service network. Okay, leverage alternative service providers, pooling, standardization, and outsourcing of service parts management to logistics. Okay, now service providers are the most successful
strategies. Okay, and what is the third success factor? Aggregate, classify and enhance service parts data and automate service parts planning and execution activities. These are the success factors that are included in the spare parts. Okay, so this is all about today's lecture. We have learnt about many things like inventory control of spare parts, that is why spare part is necessary and what is meant by spare part. Then we have discussed about the basics of spare parts management, how this management is done. There are different kind of service spare parts like first party spare parts, second party spare parts and third party spare parts. Then going further, we have learnt about the basics of spare part management, in which it is further divided into repairable and non-repairable or disposable. Okay, going further, we have discussed about the economics of service parts, and then economics of maintenance. Then we have discussed about the issues regarding service parts that are to be considered, and going further we have discussed about the success factors of these service parts. Okay, so this is all about today's lecture. I hope you are understanding all these things, and in the of this unit 5 we have remained only one topic, that is material information system, which we will going to take into the next lecture. And please go through all these things, and tomorrow is the last lecture of this subject. Okay, thank you for listening.